So now let's move to our next slide, which is from idea to business model. So far, we have learned that how we can. What is the difference between businessman and an entrepreneur? And then we have discussed that how you can identify an opportunity. Then we have discussed that how you can validate the opportunity. And now that everything is sorted, so this is the time when you can actually turn your idea into a business model. And to do that, the first thing is to the value proposition. When we say value proposition, then uh, every business end of the day has to be profitable. Let's be realistic about it. जब तक पैसा नहीं कमाओगे दोस्त तब तक बात नहीं बनेगी. Well, that's true, right? Because there are so many things are involved by creating a business. For an entrepreneur, it is very important to create a model which is profitable, right? And how you can do that? You can do it simply. People should use your product or service. Whatever you are bringing into the market, people should buy that. And why people should buy that? You have to define clearly that why customer should or will choose your solution over other alternatives. Why people should come and ask for your product or your service or your solution, not others, right? So there are so many factors. It should be cost. It should have very effective cost, the quality. It should has a very, contentful product or service or solution. It has to be quick. It has to be faster than your competitors. And there are so many other methods. So value proposition. Why should I buy this? Why you buy an Apple mobile phone as compared to any other mobile phone? For an example, if you have 1 lakh rupees today to buy a phone, which phone would you buy? You buy an Apple phone, you buy a Samsung phone, or you'll buy a Vivo, Oppo phone, because they do have product of that range as well. OnePlus has more than a lakh range of mobile phone as well. Pixel has that, but which phone would you buy, right? And this is what we call value proposition. Then revenue streams. You should diversify your income, right? Um, for some businesses, it has to be happen from the very first stage, but for some businesses, gradually it has to be sink in. So we need to understand that what kind of model we are into. If we are into a model of e-commerce, then yes, diversify income should be there. If we are into any service industry, yes. For an example, any app, right? Any fitness app. Today, you'll give it for free that people can download your app and the basic information or the basic functionalities they can use. For an example, if you just buy, while you are listening to me, while you are learning this session, simultaneously, if you'll open, Google window and you will type that I want to create uh, uh, an animated video. So they will share so many links, and in every link it would be mentioned that create animated video now for free. Once you click there, you'll go to their website. They will take you there with some of the information. You can log in, and now you can create an animated video. But once you start downloading it, or if you want to do any customization, they will come up with a subscription plan. होता है ऐसा. आप किसी वेबसाइट में जाते हो, आपको कुछ अपना कॉलेज का कुछ काम करना है, ऑफिस का कुछ काम करना है, पर्सनल कुछ काम करना है, आप किसी वेबसाइट में आते हो, वहाँ लिखा होता है कि फ्री 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 and you just jump into it and then realize if I have to use this product completely, then there is a subscription cost, you know. So that's how you can add the revenue streams. For an example, Starbucks. आप Starbucks में जाते हैं और किसी भी कॉफी शॉप में जाते हैं. मैं यहाँ पे स्टारबक्स का नाम इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज
दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट, एंड उन्होंने ये चीजों को बहुत प्रोमिनेंटली करना शुरू किया था अपने टाइम पे। अब तो ऑलमोस्ट एवरी कॉफी चेन इज डूइंग इट। व्हेन यू गो टू द स्टारबक्स, आप वहां पे कॉफी लेते हो, साथ में आपकी कियोस्क है, उस कियोस्क में स्टारबक्स की merchandise है, कप्स हैं, प्लेट्स हैं, की चेन्स हैं, राइट? दिस इज अनदर रेवेन्यू मॉडल। एंड देन स्टारबक्स में जो कप्स है, जो क्रॉकरी जो वो वहां पे सेल करते हैं, यहाँ पे जो वो टम्बलर सेल करते हैं, अभी रिसेंटली उनका कलेक्शन आया था स्टारबक्स विद मनीष मल्होत्रा। मनीष मल्होत्रा इज, आपको पता है, इज वन ऑफ द एस फैशन डिजाइनर। हमारे बॉलीवुड की ऑलमोस्ट हर बड़ी फिल्म में उनका कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग भी होता है। तो स्टारबक्स और मनीष मल्होत्रा का एक कोलैबोरेशन हुआ था। स्टारबक्स में जितने भी कप्स थे, दे आर वेरी वेल डिजाइन, रॉयल लुकिंग कप्स। क्रॉकरी थी छोटी मोटी पीस के लिए, कॉफी के लिए। तो वो मनीष मल्होत्रा के साथ उन्होंने डिजाइन करके बनाया था। इट वाज स्लाइटली ऑन अ हायर रेंज एज कंपेयर टू देयर अदर प्रोडक्ट। सो दिस इज अनदर मॉडल। आप कॉफी भी बेच रहे हैं, आप मर्केंडाइज भी बेच रहे हैं, आप की चेन्स भी बेच रहे हैं, और साथ में अब आपने डिजाइनर कप्स भी ले आए, जिसमें कि ए सेलिब्रेटेड, ए लिस्टेड सेलिब्रेटेड फैशन डिजाइनर्स का थॉट है जिसको डिजाइन करने में। सो दिस इज हाउ यू कैन डाइवर्सिफाई योर इनकम्स, यू नो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस मॉडल के लिए। कॉस्ट स्ट्रक्चर, की पार्टनरशिप। सो विल डिस्कस अबाउट द की पार्टनरशिप फर्स्ट, दैट कोलैबोरेट विद सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर और कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेसेस। आप अपने काम को आसान बनाने के लिए किसके साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एन एग्जांपल, इफ यू आर इनटू ई कॉमर्स बिजनेस, आपको एक ऐसी लॉजिस्टिक कंपनी ढूंढनी है जो आपका समय भी बचाए, विच कैन सेव योर टाइम, विच कैन सेव योर मनी, and faster than others, right? That is the key partnership. If you are into a food business, and for an example, you're running a restaurant, right? You are running a molecular food restaurant. So, raw material from where you are procuring, it should be fresh, it should be effective, and it should be high end quality. Only then people will come and buy your product or have food at your restaurant, right? For an example, Steelbird helmets, you know, later on what they have done, initially they were very popular, and but it's a big name in the helmet industry of India. And Steelbird, what they did tie-ups with some of the bike manufacturers. Now if you go to some of the bike showrooms, you will see that while you enter the store, there are bikes on the decks, good bikes, yes, all the boys have a smile on their faces, and girls as well, because these days I've seen a lot of boys and girls are pro bikers, and that it's good to see. Good to see that. But let's not divert from the topic. So, if you see that, if you enter any good bike showroom, that you will see that bikes are there on the deck. People are to tell you the specifications and everything. But on the other side of the counter or kiosk nearby, you will see helmets are there, because it is mandatory for our safety as well. And I request to all of you as well, whenever you ride, please wear a helmet. It's very important. बहुत जरूरी है. So if you see, so you will find the helmets there. So Steelbird did that with some of the companies, that if you come and, so obviously if you are buying a bike, and then you will buy a couple of helmets as well. So why not Steelbird's helmet? So this is one example of key partnership. क्योंकि हेलमेट का जो सबसे प्रायर जो कस्टमर है, वो बाइक चलाने वाला ही होगा ना, स्कूटर या बाइक चलाने वाला। तो अगर सील बर्ड ने अपने हेलमेट ही बाइक के शोरूम में रख दिए, तो द चांसेस ऑफ देयर सेल इज हायर। सो दिस इज व्हाट वी कॉल की पार्टनरशिप, वन एग्जांपल। देन कॉस्ट स्ट्रक्चर, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। आप इसको और ज्यादा बेहतर पढ़ने के लिए रेफर करिए इकोनॉमिक्स में, दैट हाउ टू create cost structure for businesses. But here, if we'll discuss in brief, is that how to balance your fixed and variable cost. What is fixed cost? किसी भी business की, किसी भी model की fixed cost क्या होती है? The fixed cost which is irreparable.
जो कि लगनी ही लगनी है, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। फॉर एन एग्जांपल, if I'm manufacturing these headphones, these AirPods or whatever, what I need to do, इसको बनाने का एक एक्स अमाउंट है, राइट? जो वो लगना ही लगना, फैक्ट्री लगेगा, मेरे स्टाफ आएगा, उनकी सैलरीज होंगी, लोग काम करेंगे, दिस इज फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट, कल को रॉ मटेरियल महंगा हो जाता है ना, देर आर सम geographic or political changes happen in the industry, and some decisions, policies, government policies change, और वो आपका डीजल महंगा हो जाता है या सस्ता हो जाता है, प्लास्टिक महंगी सस्ती हो जाती है, किसी एक XYZ रॉ मटेरियल पे बैन लग जाता है, या कोई चीज हम इंपोर्ट करना विदेश से बंद करते हैं। सो मेनी फैक्टर्स, दोज आर वेरिएबल कॉस्ट। मार्केटिंग कॉस्ट कैन बी वेरिएबल, है ना? कभी आपको सेल अच्छी जा रही है, आप वेरिएबल कॉस्ट, आपकी मार्केटिंग कॉस्ट नीचे आ जाती है। कभी आपको लगता है आपको एक नया प्रोडक्ट इंफ्यूज करना है, आपको अपनी मार्केटिंग ज्यादा करनी पड़ेगी, तो आपको, सो दीज आर वेरिएबल कॉस्ट, सम ऑफ द फिक्स कॉस्ट, राइट? Then you have to be very careful as an entrepreneur that all these things should fall in place, right? Value proposition, revenue streams, cost structure, and key partnership. Everything should fall in place. If everything is fall in place, then you are there. It means that idea to business, आपने अपने आइडिया को एक बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट कर लिया है, यू हैव डन इट। So there are a lot of challenges will come up, and already there are few challenges you have already crossed, because as per our slides, once you get into the real world, then obviously there would be more, but I'm sure that you all will drive through. So from idea to business, value proposition, revenue streams, cost structure, and key partnerships. Important. Then there are some common pitfalls as well. Pitfalls, when we say that, there are few drawbacks, or there are, not drawbacks, I would say there are some major challenges, which we should take care, and which we should, try to get away from, right? As an entrepreneur, you should not get into kind of business wherein you are solving imaginary problem. So it happens with many of the founders. Many of the founders, even they are seasoned or they are new, sometimes they कुछ अलग और कुछ हटके करने के चक्कर में आप कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसकी जरूरत ही नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल, गूगल ग्लासेस, मैंने इनिशियली उसका नाम लिया था, यहाँ पे वो बिल्कुल परफेक्ट फिट बैठता है। There are a lot of research gone into it. There are a lot of ideation, and आपने उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया, but it was not required. I mean, what was the requirement? शायद मार्केट सही से नहीं हमने समझी, बिकॉज रेदर देन गूगल क्लासेस सीधे एआई आ गया, या फिर वर्चुअल रियलिटी आ गया, या फिर एक मेटावर्स आ गया। लेकिन वो गूगल क्लासेस का जो कॉन्सेप्ट था, वो कहीं ना कहीं पे लोगों को कहीं क्लिक नहीं किया कि व्हाई शुड आई बाय दिस। तो गूगल एक ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए निकला था जो एक्चुअल में थी ही नहीं, राइट? सो दिस इज वन क्लासिकल एग्जांपल। आप जरूर पढ़िए गूगल क्लासेस की केस स्टडी को, प्लीज रीड अबाउट इट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रीड अबाउट इट, और लुक एट अ वीडियो जो वहां पे भी आपको अवेलेबल, राइट? देन अगेन अ पिटफॉल, वेरी इंपॉर्टेंट, इग्नोरिंग फीडबैक। हमने ये चीज पहले भी डिस्कस करी है, कस्टमर फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो नहीं करते हैं उनके लिए हमने नोकिया का डिस्कस किया था, यहाँ पे क्लासिकल एग्जांपल है ब्लॉकबस्टर। सो ब्लॉकबस्टर एक डीवीडी बिजनेस था, यूएस का, बड़ा पॉपुलर था। और एनी अदर डीवीडी बिजनेस भी आप देखिए, इंडिया में भी अगर किसी की शॉप्स हैं या कोई डीवीडीज मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो अ, अगर लोगों ने कहना शुरू, नया मार्केट ट्रेंड आ रहा है, या लोग फीडबैक दे रहे हैं कि हमको तो ये चीज अच्छी लग रही है बजाय आपके डीवीडी बिजनेस के, और हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो क्या होगा? हमको कोई रिप्लेस कर देगा। कौन करेगा रिप्लेस? Netflix. This is a classical example that how Netflix killed Blockbuster. So you should read about it. It's very interesting case study again.
Blockbuster was a DVD business, and then Netflix came into the picture. Netflix was a streaming platform. They ignored कि नहीं ऐसा थोड़ी होगा कि कहाँ से लाएंगे इतना कंटेंट एंड वो थोड़े दिन चलेगा. They will not. Netflix won't be able to sustain, but rest is history, right? So ignoring people feedback and not adapting with the market scenario or changes in the economic world. So this is again a very big pitfall. Underestimating execution, right? Sometimes we think that our idea is brilliant. हम तो बस ऐसे बोलेंगे हो जाएगा. Sometimes it happens with all of us, right? But it never happened this way. Sometimes even you know what happened? That in fact, you know what happens sometimes that your idea is basic. It's not a great idea, but execution make it wonderful. And sometimes it's vice versa. That your idea is amazing, but your execution is not matching the level of your idea. So execution is the key. Execution is the key, right? How you execute it. So there are so many examples of this that when a perfect idea meets perfect execution, right? Zepto or Zomato or Swiggy. These are very popular names. That's why I'm taking these names. Perfect idea, perfect execution. Ola, electric. Perfect idea, bad execution. I'll see. I'll see. So you need to understand the power of execution. Running out of cash. Okay. Maintain runway by controlling burn rate. This is what is burn rate? Burn rate. Okay. What is runway? First of all, runway is when you start a business. So as an entrepreneur, there are few things which you need to understand that when you start a business and when the first time you will get a revenue or profit, then there is always a gap. There's always a lag because you are working on a product, you are doing the testings, you are doing the opportunity validation, there are some spend there, and then you are prototypes, and then you actually launch to the market, then the marketing costs, and there's so many things happens. You have to pay salaries to people, you know. So the amount which you should have in your bank account or in your business account or any capital you should have to run that business till the time you are not getting your first paycheck back is the runway. What is burn rate? Burn rate is when you start, you know, from the very first date, business cannot be in profit. It has to be go some initial losses and then eventually slowly it comes to the profit. And we will not call it losses, we call it the cost of a business establishment. So that this is what we call a burn rate. That for an example, you are manufacturing this pen for 100 rupees and the price of this pen is 200 rupees and 100 का पेन बना 200 का बेचा 100 का प्रॉफिट. पर ऐसा नहीं होता. 100 का पेन बना आपने 200 का बेचना है उसके लिए आपको पहले मार्केटिंग करनी है. 50 रुपए का मार्केटिंग किया, 20 लोगों से मिले, उनको चाय पिलाई, कॉफी पिलाया, उनके साथ बिजनेस मीटिंग करी, फिर एक स्टेशनरी शॉप के साथ कांटेक्ट किया, फिर एक दूसरी स्टेशनरी शॉप के साथ गए, उनको मनाने के लिए आपने अपना पोर्टफोलियो बनाया, प्रेजेंटेशंस बनाई, उसके लिए आपने किसी को हायर किया, ऐसे करते उसमें आपके 70 रुपए लग गए एंड देन इवेंचुअली योर प्रोडक्ट आपका पेन मार्केट टेबल पे बिकने के लिए रेडी है. तो अब अपना 100 रुपए का आपका पेन था, 200 रुपए आपने उसको बेचा, लेकिन आपके खर्चा उसके ऊपर हो गया 120 रुपए, तो 20 रुपए आपका बर्न है. अगर आप पूरे 200 खर्च के 200 कमा रहे हो तो इट्स ब्रेक इवन, लेकिन अगर आप ऊपर खर्च करो दैट्स बर्न. लेकिन दैट नॉट लॉस इनिशियली. व्हाई? बिकॉज इट्स अ कॉस्ट ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस. अगर वो प्रेसिस्टेंस, अगर उसकी में प्रेसिस्टेंसी कंटिन्यूटी बनी रहती है, अगर वो प्रेसिस्टेंस रहता है अपने उस कॉस्ट के साथ, देन देयर इज अ ट्रबल. अदरवाइज अगर आप उसको सही एग्जीक्यूशन करेंगे वही, अगर आपका अ, अगर आपका फीडबैक पे आप ध्यान दे रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, आप एग्जीक्यूशन सही कर रहे हैं, आपने जो हमने पीछे डिस्कस किया है मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ. अगर आप आपका कॉस्ट स्ट्रक्चर सही है, वैल्यू प्रोपोजिशन सही है, आपकी स्ट्रीम सही है, रेवेन्यू की आपकी पार्टनरशिप सही है,
तो इवेंचुअली आपका वो जो बर्न है वो बहुत जल्दी प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। बट द क्लासिकल एग्जांपल इज बायजू, राइट? बायजू के पास एक ऐसी सिचुएशन आई कि दे आर जस्ट रन आउट ऑफ मनी, राइट? आपको ये बिजनेस मॉडल भी पढ़ना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए, व्हाट नॉट टू डू, द केस स्टडी ऑफ बायजू, right? Because customer acquisition cost cannot be always higher than your profits. You need to understand that. Customer acquisition cost, yes, it is integral part of any business. क्या होती है customer acquisition cost? वही जो मैंने आपको बताया कि आपको एक 100 का पेन था, 200 का आपने बेचना है, लेकिन वो कस्टमर को बुलाने के लिए आपने क्या किया? 50 रुपए का मार्केटिंग किया, 70 रुपए की आपने पीपीटीज बनाई, लोगों से मिले, मीटिंग किया, तो वो 50 + 70, 120 रुपीज इज व्हाट? सीएसी, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। 100 का प्रोडक्ट, 120 रुपए का सीएसी, 200 का सेलिंग प्राइस, 20 रुपए बर्न हुआ। लेकिन एक पेन आपका बिक गया और ये अच्छा पेन है, और मैंने अपने दोस्त को बताया उस शॉप में वो अच्छा पेन है, तो दूसरा कस्टमर आया, तीसरा कस्टमर आया, इससे आपकी सेल होने लग गई, और आपका जो सीएसी था वो 120 रुपये अब नहीं है, क्योंकि अब आपकी मार्केटिंग नहीं हो रही, वर्ड ऑफ माउथ हो रहा है, आपका प्रोडक्ट ऑलरेडी हिट है, तो आप 50 की बजाय उसको 20 रुपए कर सकते हैं। और एक स्टेशनरी शॉप के पास अब आपको दोबारा जाने के लिए प्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके पास टेस्टिमनी है, एवरीबॉडी इज लुकिंग एट इट, तो आप इजीली रीच आउट करते हैं, वो 70 रुपीज आपके कम हो गए। तो जब आपके 10 प्रोडक्ट बिक जाएंगे, तो आपकी मार्केटिंग कॉस्ट सिर्फ 40-50 रुपए रह जाएगी, पर पेन के ऊपर 20 रुपए रह जाएगी, तो आपका 120 का पेन बिकेगा 200 में, 80 रुपए प्रॉफिट, एंड दैट्स हाउ योर burn rate will reverse to profit. So आपकी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कम हो गई। सो तो ये पिटफॉल्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका आपने ध्यान रखना है। लाइक एन एंटरप्रेन्योर, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी यंग एंटरप्रेन्योर टू अंडरस्टैंड दैट you should not get into yourself into solving the imaginary problems, you should not ignore feedbacks, you should not underestimate the execution, and should not run out of cash। मैं भी नहीं होना चाहिए। All right.